अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू काम कहानी, a podcast for the career curious. आज हमारे साथ हैं जवाद फरीद. ही इज़ एन ऑथर, फाउंडर एंड एक्चुअरी. तो आज उनसे सुनते हैं उनकी काम कहाँ है. अस्सलाम वालेकुम. Walaikum salam. How are you? Very well. Tell me something about your books, your 5 books that you've written. पहली तो was जब Avicina, the first startup, जो डूब गया पहला वाला. I think looking back, I'd say it was possibly the best therapy. Because जो कुछ जहन में आया वो मैंने लिख दिया. अच्छा, ओरिजिनल प्लान ये था कि मैं एक आर्टिकल लिखूंगा 10 पेज का, 12 पेज का, दैट विल एक्सप्लेन कि कंपनियाँ डूबती क्यों हैं. और वो 10 पेज का आर्टिकल जो है मैं पिच करूँगा हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के पास. और उस ज़माने में फेलियर कोई लिखता नहीं था. तो जब आप किताबें पढ़ते थे, सारी किताबें होती थी कि सक्सीड कैसे करते हैं. फेलियर के ऊपर कोई किताब नहीं थी. एंड हम बात करें 2003-2004 की. अब तो काफ़ी फैशनेबल हो गया टू राइट बुक. 3-4 में there was you could hardly get a book that would be about failure. 5-6 तक आना स्टार्ट हो गई नहीं, बट 4 से पहले जितनी इफ यू स्टार्ट बॉर्डर से ले जाएं, अमेजोन के पे चले जाएं. पब्लिशर्स कहते होंगे व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, फेलियर पे लिखेंगे. how to succeed, one win, right? But there was nothing about you know how to lose. लिखना स्टार्ट किया तो पहले आई थिंक 10-15-20 पेजेस, 30 पेजेस हो गए. फिर आई सेड कि अच्छा ये तो आर्टिकल नहीं है, इसमें कुछ और होगा. ये रिबूट है. ये रिबूट ओरिजिनली स्टार्टेड एज ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, BSOD. सो अगर आपके पास विंडोज़ की मशीन थी उस ज़माने में, तो उसके ऊपर जब वो विंडोज़ क्रैश करती थी तो आपको एक ब्लू स्क्रीन करती थी, BSOD. सो दैट वाज द ओरिजिनल इंस्पिरेशन, इज अ ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, राइट? तो दैट वाज द नेम दैट वी पिक्ड अप विद. फिर जब आई थिंक 4-5 साल गुजर गए, हम 3rd एडिशन में पहुँच गए, 2nd एडिशन में पहुँचे, तो विंडोज़ बहुत स्टेबल हो गया था. BSOD बहुत रेयर हो गई थी. आती थी, अभी भी आती है. अच्छा. There are it. So उस ज़माने में I think you would get to see it once every 3 days, 4 days. हाँ, पहले तो बस now you see it. Yeah, now you see it maybe once in 6 months, once in 8 months or so. तो BSOD और reboot start यहाँ से हुई. फिर I think I came to कराची. मैंने एग्जाबिस में कोर्स पढ़ाया entrepreneurship के ऊपर. उसमें जो जितनी लिखी हुई थी 170-80 पेजेस, उसको इस्तेमाल कर लिया. उसमें बच्चों ने बहुत सारे सवालात पूछे, इनके जवाब किताब में मौजूद नहीं थे, तो वो लिखना स्टार्ट किए. तो 100 से 150 पेज हो गई, फिर 180 पेज हो गई. फिर उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा जो है अब तो बहुत बड़ा हो गया माशाल्लाह, उसको मैंने कन्विंस किया कि तुम एडिटर बन जाओ. वो एडिटर बन गया. फिर हम आई थिंक बैठे हुए थे कहीं 2006 की बात है, 5 की बात है, 5 की बात है. एंड मैंने लिखना स्टार्ट किया कुछ, एंड वो 2 या 3 पेजेस लिखे तो कहानी बन गई बाकायदा. एंड आई सेड दिस इज़ अ ग्रेट स्टार्ट, बट दिस इज़ नॉट अ ग्रेट स्टार्ट टू एन आर्टिकल, दिस इज़ अ ग्रेट स्टार्ट टू अ बुक. तो फिर उसको पैकेज कर दिया. एंड दैट्स हाउ द फर्स्ट वन स्टार्टेड. रिस्पॉन्स इसका माशाल्लाह बहुत अच्छा है. एंड आई थिंक दैट वाज, जब आप किताब लिखते हैं तो मुख्तलिफ तरह के लोगों के रिएक्शन होते हैं. जो रिबूट BSOD का पहला वर्जन था वो मैंने प्रिंट किया बड़े दिल से. एक बहुत बचपन का पुराना दोस्त है, कज़न भी है, रिश्तेदार भी है, वो दुबई में था, उसके पास मैं लेके गया. मैंने कहा आमिर तुम पढ़ लो उसको, मुझे बताना किताब कैसी है. एंड फिर कोई जवाब नहीं आया मेरे पास से. फिर 4-6 महीने के बाद दोबारा गया आमिर से मिलने के लिए किसी बात. मैंने कहा क्या हुआ भाई? उसने कहा जवाद आई हैव टू टेल यू स्टोरी. नाम थिंकिंग सम टेल मी, क्या शानदार किताब है. जवाद, मैंने अपना सोफे के ऊपर जो है कुशन रखा, साइड के ऊपर ऑरेंज जूस की मैं पूरी बोतल और ग्लास लेके आया बर्फ़ भर के कि मैं ऑरेंज जूस पीऊँगा, तुम्हारी किताब पढ़ूँगा. और बना. और मैंने जो है फिर किताब उठाई. किताब भी मोटी प्रिंट हुई थी, 180 पेजेस इन अ फाइल. मैं किताब खोली, मैंने शायद 3 पेजेस पढ़े होंगे, फिर मैं सो गया. दैट्स हाउ बैड इट वाज. बुक रिव्यू, दैट वाज इट वाज. तो वो जब बुक रिव्यू हुआ तो उसके बाद तो दिल इतना ख़राब हुआ कि 2 साल तक किताब हाथ ही नहीं लगा. डिडंट टच इट. एंड फिर आई थिंक समथिंग एल्स हैपेंड एंड आई सेड अच्छा मैं करता हूँ. अच्छा होता ये था कि you didn't show it to anyone else. हाँ, मेरे को दिखाई, 2-3 लोगों को और दिखाई. एक एडिटर थी, उसको भेजी, उसने कहा आपका दिमाग ख़राब है, ऐसी किताब नहीं. तो थोड़ा सा आप तो feedback was very negative. But the editor to her credit said कि it's fixable. तो ये 8-9 चीज़ें आप फिक्स कर दें, किताब निकल सकती है इसमें से. तो उन्हें फिक्स कर दी. फिर उसको वापस भेजी. उसने अच्छा इसको ये करें, सारे काम कर लिए. फिर एक और अदनान who became the editor. Adnan contributed a lot. There were some other people. So 6 में जो है किताब आ गई. But it came as a digital book. And it was well received. So a lot of people to this day, tell me कि हमने खरीदी थी Amazon पर, लिस्ट कराई थी, and we bought it. फिर वो आई थिंक 2nd एडिशन आया, फिर 3rd एडिशन आया. फिर मैं SPGN में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, started using the SPGN.
तो वहाँ पे बच्चों से फीडबैक आना स्टार्ट हो गया कि इसको आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स एंड दिस इज रियली ट्रू एंड दिस इज ऑल द रीजन व्हाई आई कंटिन्यू टीचिंग इफ यू हैव a good group of students, doesn't matter what you teach, whether it's treasury, portfolio optimization, risk management, entrepreneurship, tech product development, data analysis, doesn't matter what you teach. If you have a good group of students, they would challenge you. As a teacher, they would challenge you. They say, I don't understand this. They won't say, aap bure teacher hain, beekar teacher. They may say, I don't understand this. I don't understand. Or even, I don't agree with what you're saying. So, come up with something better. Give me a reason why I should believe that what you're saying is true. And I think a lot of that happened in SPG. So at least I would say so after Reboot, the next two books were textbooks that Macmillan, which is a big publisher, published. I think those textbooks owe their origin to the Q&A, the feedback, the back and forth that happened at SPG for 11 years. तो वो दो वहाँ से निकली. तीसरी जो है models at work and option Greeks primer came from there. Chauthi jo hai, which was portfolio optimization model, I think this I started teaching in 16. And pehli jo class thi usme I just, I had some material and I had a plan, but I didn't have a lot. So us class mein there was a chartered accountant who was also CFO of a large firm. And wo bahut hi se kehte hain sharp, old school. Young guy, but very sharp, very old school. He says, आपने पढ़ा तो दिया, आपने मॉडल बना भी दिया और आपने दिखा भी दिया और हमें सिखा भी दिया कैसे बनाते हैं, बट मेरे कुछ समझ में नहीं आया. मुझे लिखा हुआ चाहिए. जब तक मैं लिखा हुआ आपके हिसाब से इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करूँगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा. एंड आई नीड दैट बिफोर यू टेक द एग्जाम. ऐसा अच्छा. तो फिर मेरी जो स्लाइड्स थी उनकी मैंने लिखना स्टार्ट की. सो थिंक इन टर्म्स ऑफ रीबूट की कहानी है 2003 में लिखना स्टार्ट की, 6 में पब्लिश, 3 साल लगे. मॉडल दैट वर्क जो है 6 में लिखना स्टार्ट की, 13 में पब्लिश हुई, 7 साल लगे. ऑप्शन ग्रीक्स प्राइमर जल्दी बन गई, 2 साल में बन गई. पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन मॉडल आई थिंक आई रोट इन अबाउट 6 days, ऑलमोस्ट अबाउट 200 pages. I love इस पूरी स्टोरी के अंदर I love how everything comes out of some kind of a failure and some kind of a challenge, and you take that challenge and you make something out of it. I mean, it's really it's commendable, of course it is, but it's also unbelievable, and not everyone does it. Not many people do it. Are you able to do it inside? How do you? What makes you so elastic? You're challenged and then you come back with something of value. You actually make something out of it. किताबों के मामले में तो I'd say it's the students. I think it's one of the things you realize as you grow older over a period of time. 3-4 चीज़ें आपको बहुत जोर से लगती हैं, और बार बार लगती हैं. एक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको, हमारे एक इम्तिहान था V480 का, सोसाइटी ऑफ एक्चुअरीज का. इट वाज फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स का प्राइसिंग का पेपर था. उसकी किताब है, टेक्स्ट बुक, जॉन सी हल की किताब है, ऑप्शन डेरिवेटिव्स एंड अदर सिक्योरिटीज़, एंड दैट्स अ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक. जब मैंने पढ़ना स्टार्ट की थी तो 3रा एडिशन रहा. अब मेरा ख्याल शायद 17वां, 14वां, 15वां या 16वां एडिशन चल रहा है उसका, राइट. एंड दिस इज़ अ 30-year-old बुक. पहली दफ़ा मैंने शायद पढ़ी होगी 94 में या 95 में. वो इम्तिहान मैंने शायद 3 दफ़ा फेल किया है. I failed it 3 times. And on the actuarial side, what you'd see is that the model for appearing and preparing for an exam was very simple. जो curriculum दिया गया आपको, वो curriculum 6 दफ़ा पढ़ी, और फिर जो उसके इम्तिहानात हैं and पढ़ी, not talking about शूज़र के short notes, not talking about कि मुझे चरवा मिल जाए या खलासा मिल जाए. All over. You have to read the bloody book, all of it. So I failed that exam 3 times. And the model for preparing for the exam was to read the entire book 6 times. So I read that book 18 times. And when I failed the exam, I didn't fail कि मेरा 0 आया. हमारे grading scheme थी 0 से 10 का grade होता था, 0 से 5 fail होता था, और 6 पास होता था. तो मैं पहली दफ़ा में शायद 3 आया था, दूसरी दफ़ा 5, तीसरी दफ़ा भी 5 आया. So 5 आया. तो good preparation, right? Not begun preparation. And there was more material side in addition to Hull. So मैंने 18 दफ़ा किताब पढ़ी. 18 दिन किताब पढ़ी तो, and then I
Before I got to Columbia, I worked for Goldman. I worked for Goldman for about 4 months. Goldman में जो मेरी जिस टीम के साथ मैं काम कर रहा था, जो मेरा रोल था, that role sat between firm-wide risk and the desk that I used to work for. तो firm-wide risk में लाइन से PhDs भरे हुए थे, and they would come and they would say, अच्छा ये ऐसे होगा, and I would say, किधर क्या, where does it come from? And then I would ask them कि तुम्हें कहाँ से पता चला ये ऐसे होगा? मैंने PhD पढ़ा था, तो मैं थोड़ा सा मैं PhD कर लूँगा जाके, कभी मुझे मौका मिलेगा तो I would like to do the PhD finance के courses. मैं कोलंबिया पहुँचा, कोलंबिया में जो है हर कोर्स बहुत महंगा था, तो जो कोर कोर्सेज थे, I came up with a plan to exempt out of them. I got exempted out of 5 core courses. But when you got exempted out of 5 core courses, you had to take an advanced course. You couldn't just say कि जी मेरी डिग्री हो गई, मुझे 5 पे exempt हो गई. तो मैंने पहला अपना elective लिया in my first term at Columbia was a PhD finance elective called Contemporary Finance, जिसमें वही मटेरियल था जो हल में पढ़ाया गया था, जो मैं 18 दफ़ा पढ़ चुका था. And now what is the context? When I went to that professor, she said to me, Jawwad, हर साल मेरे पास कोई एक ये रैंडम काउबॉय MBA स्टूडेंट आया था कि जी मैं सब पढ़ा हुआ है, मैंने तो ये भी किया, मैंने वो भी किया हुआ है, और ये तो बच्चों के पास कर लो. एंड हर साल एट द एंड ऑफ टर्म द डीन कम्स टू मी एंड सेज कि खुदा के वास्ते इसको पास कर दो, वरना ये इसका करियर तबाह हो जाएगा, ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, मर जाएगा बच्चा. तो मैं पिछले 4-5 साल से तो मैं एक सेक्शन दे रही थी, इससे मैंने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम फेल हो तो अगर तुम फेल होगे तो फेल हो जाओगे, राइट. आई सेड मैंने 18 दफ़ा हल पढ़ी हुई है, आप क्या कर लेंगी, मेरा क्या बिगाड़ लेंगी, मैं तो कुछ पढ़ा होगा. अब मुझे उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया. शी इज़ अ फिनोमिनल टीचर, शी वाज अ ग्रेट टीचर, बट इट वाज लाइक कि ज़बानी मार, couldn't make heads or tails out of it. So कुछ चीज़ें बहुत मुश्किल से समझ में आई, बहुत सर मारना पड़ा, बहुत ज़िल्लत और ख्वारी से गुजर के जो है वो चीज़ समझ में आई. So you passed that course? वो एक लंबी कहानी है. I passed that course, but वो कैसे हुआ वो एक अलग मौका है थोड़ा, which we'll talk about some other time. But anyhow, so जब आप इन तमाम चीज़ों से गुजरते हैं, when you figure out all that you've gone through to understand this one itsy bitsy little concept, and you see a student sitting in front of you struggling, you don't want to wish what you've gone through on him. You want to say, let me explain, rather than telling with the entire katha ki kahan se start hui aur kahan tak pahunchi and make you walk through that torturous path, let me just show you how it's done. And once you get that into your head, then you realize that ultimately बहुत सारे challenges वो खुद face करेगा, गुजरेगा, but at least you can show, देखो एक दरवाज़ा ये है, एक दरवाज़ा ये, एक दरवाज़ा ये, तुम्हारी मर्जी, तुम किस दरवाजे से, दरवाजे तुम्हारे सामने, चॉइस तुम्हारी, खुलना तुमने, गुजरना तुमने, you have to take the step across the border, but the least I can do is show you those doors. And when you get a good student, and I've been very, very lucky, I've been very, very blessed, चाहे वो फास था, चाहे वो जाबिस था, चाहे वो हबीब था, चाहे वो IB है, चाहे वो SPJN था. One of the best gifts that I've gotten were the students in my class. एक ग्रुप SPJN दुबई and Singapore दोनों में पढ़ा है मैंने उस ग्रुप को, and that's the story behind Option Breaks Primer. They came in the class, the course was in risk management. They said मैं किताब नहीं पढ़ना. हम सब जो हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बैक ऑफिस में काम करते हैं बैंगलोर के अंदर, हम सबों ने FRM किया, हम सबों ने CFA किया, उसमें किताब नहीं पढ़नी, हमें ये पढ़ना है कि ये होता कैसे है. So don't tell us about कि ये फार्मूला है, इसकी एप्लीकेशन ये है. Tell us ये है क्यों, what is the basis. We want to understand the intuition and the logic behind that thinking. Show us that. Now break it down for us. Step-by-step walkthrough of real-life examples, using the models, and then stopping at each point in time and saying कि देखो ये जो ना ये हमने इसलिए किया है. That is what we want to understand. We want to understand कि फार्मूला वो हमें आता है, हम दे चुके हैं सीधे के इम्तिहान में, हमें किसी ने नहीं पढ़ाया. अब हम जो अगर आप इनसे सवाल पूछें कि ये कैसे होता है, उसका जवाब क्या है, ये सवाल, ये इनपुट पैरामीटर्स हैं या आउटपुट पैरामीटर्स हैं, मुझे बताएं आंसर क्या होगा, हम आंसर दे देंगे, पर वो कैसे आया, कहाँ से आया, क्यों आया, we don't understand this. Explain that to us. So I mean, they were already very motivated students, clearly. Yeah. And with this group, I was very lucky because मैंने को एक कोर्स पढ़ाया and फिर मैं घर चला गया, तो अगले दिन फ़ोन आया डॉक्टर गांधी का कि जवाब वो थोड़ा सा मसला हो गया. क्या हुआ? कहते वो
ये बच्चे अब सिंगापुर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, बट उन्होंने कहा है कि हमने जवाद से पढ़ना है, तो तुम सिंगापुर आ जाओ। मैंने कहा मैंने अभी तो पढ़ा है, उसका क्या वजह सकता है? तो उसको उन्होंने नहीं पढ़ना, उसने कहा जवाद से पढ़ना है। वी वांट हिम टू टीच अस दिस कोर्स। एंड मैंने वॉक टू द क्लास में, क्या हो गया भाई, व्हाट हैपेंड? सर हमने वो जैसे वो काम किया था ना, वही काम यहाँ पे भी करना, जैसे आपने वहाँ पे काम किया with the students. So they took me with them. इसी क्लास को मैं पढ़ा रहा, नहीं इसको नहीं, पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन मॉडल्स की क्लास में एसपीजे में पढ़ा रहा था। एंड ट्विटर पे आई वुड शेयर कि हमने आज ये क्या काम इस क्लास में। तो एक दिन जो है किसी ने रैंडम अकाउंट है ट्विटर के ऊपर, अनोनिमस अकाउंट, आई डोंट नो हू द हैंडल वाज, ही टैग्स मी जस्ट कि आप सारी दुनिया में पढ़ाते रहते हैं, हमें ही पढ़ा दें। तो मैंने कहा आप कहाँ हैं? तो कराची में। कहाँ पढ़ते हैं? IBA में। तो मैंने क्या पढ़ना है? कहते हैं ट्रेजरी, सॉरी पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन मॉडल जो पढ़ा रहे हैं। तो आई सेट कि आप एक काम करें, बच्चे हैं आपके पास, आप क्लास इकट्ठी कर लें, IBA से परमिशन ले लें, अगर आई एम एक्सेप्टेबल एज अ टीचर आई कम एंड टीच। दिस इज 16 या 17 की बात है। सर ठीक है। 4 दिन बाद जवाब आ गया कि जी आप कब आ रहे हैं कराची वापस? मैंने कहा मैं, मेरा कोर्स खत्म हो रहा है, मैं आ जाऊँगा, अब IBA आ जाएँ। वो सलीम उमर साहब हैं जो प्रोग्राम मैनेजर हैं एग्जीक्यूटिव MBA के, जाके मिलने सलीम साहब से आके बात कर ली। सलीम साहब ने कहा कि भाई ये 18 बच्चे हैं, ये पढ़ना चाहते हैं आपसे, ये कोर्स है, आपके जहन में आउटलाइन है? ये आउटलाइन है। कहाँ ठीक है, आउटलाइन मैच करती है, आप करा लीजिएगा। तो वो 18 बच्चों से पहले एक कोर्स पढ़ा था, एंड सिमिलर टू SPJ, देन दे सेड कि अच्छा हमने ये पढ़ लिया, अब ट्रेजरी भी पढ़ना, ट्रेजरी पढ़ा देंगे। You own more. तो मैंने कहा कि मैंने, मुझे कोई एतराज़ नहीं, आप सलीम साहब से आके बात कर लीजिए। सो उन्होंने वही कहा, वो 18 में शायद 12 बच्चे बच गए, मैंने ट्रेजरी का कोर्स पढ़ना है, तो वो आ गए। और फिर अब मैं आपको एक्सप्लेन द मोटिवेशन। when a lot is motivated, they say, such as the students at SPJ and such as this initial group of students at IBA, they say clearly, हमें किताब नहीं पढ़नी है, हमें पढ़ना है, हमें पढ़ाएं। एंड अगर ये बच्चे आपको मिल जाएं, then you don't want anything else in the teacher, then you're done, then you're very, very good. And the reason you were able to motivate them like that and make them really loyal fans was because you had really engaged जो material जो था when you were a student, you had really engaged with that material. Is that the reason, or is the reason that you were a better quote unquote performer? I'm not sure. But in other words, what makes you a really good teacher? Which you of course are. I think this is a really important point, because this goes back to the core of the challenge of becoming a teacher. I have an old friend, came back to Pakistan, हम एक ट्रेनिंग वर्कशॉप कर रहे थे फॉर बैंकिंग कस्टमर्स। तो मैं 3 की बात है या 3 की बात है, शायद 2003 की बात है। तो मैं आउटलाइन बना रहा था और मैंने कहा कि भाई ये आउटलाइन है। तो ही सेज टू मी कि जवाद मियाँ ऐसे नहीं पढ़ाते, पढ़ाने का बहुत आसान तरीका है। सर बताइए क्या तरीका है? तो देखें, आप टॉपिक पिक करिए ना कि पढ़ाना है आपने, अब आप इस टॉपिक की सबसे मुश्किल चीज़ें ढूंढ के निकाल लें और वो लोगों के सामने रख दें। और the key trick, this is a good old friend of mine, he said the main key trick is to faking it enough for your audience to believe that you know the answers. तो टॉपिक ऐसा पिक करें जो किसी की समझ में ना आए, and you just have to be confident enough to stand up in front of them and say कि जी मुझे सब कुछ आता है और आपको कुछ नहीं आता। ये establish कर लें। एक दफ़ा आपने ये establish कर लिया, the class is yours. So एक तरीका ये पढ़ाने का, ये hack है एक तरह से। एक तरीका ये, but this is not what I do, this is not what I believe. But a lot of teachers believe that this is the right way. To establish superiority, Dominance. I want to walk into the classroom, I want to show you how much I know, and I'm going to show you how big of an idiot you are, that you don't know anything at all. And once you establish my dominance, once you accept the fact that I am, the sum of all truths, then we can move forward. And in most instances, that is the end of the relationship. Because as a student, you're not there. You're there to learn, to grow. You're not there to be dominated, right? But a lot of us teach like that, right? And
And a lot of us start teaching like that. And I would even say that maybe once upon a time, that's how I started also. I don't know. I don't remember. I didn't think I started with that, but it's possible that that's how my class Maybe a went. bit of insecurity also, that you feel the need to Control kar le. But I think somewhere along that way. So, if you go back to my first class that I taught at FAST, जब मैं software engineering course पढ़ा रहा था, तो I think my stance in front of my students was essentially कि तुम सबों ने बहुत कुछ पढ़ लिया है, but you're not good enough. And I'm going to show you how to become good enough, right? That's how it started. But that's not the right way to teach, and that's not the right way to continue to become a teacher. I think somewhere along the line that maybe part of this was SPJ, maybe part of this was something else, maybe part of this was teaching. Because I've not just taught in academia, I've also taught corporate customers. So I've taught Treasury specific courses to treasuries in Pakistan. So if Treasury में जाके पढ़ाते हैं तो traders and treasurers are very upfront, very blunt. I had एक मेरे बहुत पुराने client हैं, दोस्त भी हैं, अजीज भी हैं, बहुत साथ दिया उन्होंने. And he has this favorite line, and you'd hear that line on phone. And he was also a client, so we'd done a lot of work, not just training work, but also consulting work, also technology work, implementation work. So when he'd call you, right, and he'd start by saying, Jawwad Miyan, आप तो बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, आपने तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से MBA किया है, fellow study of Actuary, you know you're in trouble. And then he would say, he'd start with his killer, and मैं तो अंगूठा छाप आदमी, मुझे क्या पता. The minute he said this, you know कि आपसे गड़बड़ हो गया है. So he would say, मैं आपसे सिर्फ एक बहुत जाहिराना है मकाना सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं जसारत कर लूँगी. ऐसा फ़ोन पे कौन से आप गाड़ी ड्राइव करें फ़ोन पे जाएँ. नहीं सर कि मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, जरूरत करना चाहता हूँ, पूछने की कि ये आपने किया है, ये ऐसे होगा जैसा आपने किया है, जो मुझे लगता है कि सही तरीका है, या ऐसे होगा जो मेरे हिसाब से मेरा जहलाना तरीका है. And then you'd say, so I think we had multiple such interactions with corporate customers, with almost every single treasury in Pakistan between 2004 and 2008. And we'd gotten to a point where we'd accepted the fact. It was perfectly normal for us to say, when he would call and say this, I'd say, Bhai, I'm not sure. I don't have the answer. Let me get back to my desk, to my laptop, to my computer, check and get back to you. And I think I'd said this, हम system implement कर रहे होते थे, I'd said this, I think maybe 5 times a day for the last 5 years. So, जब आप पढ़ाते हैं और जब आप उस पढ़ाई की बेसिस पे सिस्टम बनाते हैं और जब आप सिस्टम दुनिया में लेकर आते हैं और सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, कस्टमर सिस्टम नहीं चलता, तो कस्टमर डजंट केयर कि आपने हल्की किताब से मॉडल बनाया है. सिंपली मेरे हिसाब से मॉडल नहीं चल रहा. जब वो मॉडल आप मार्केट से कंपेयर करते हैं, आपके मॉडल से कीमत निकलती है, मार्केट की कीमत से मैच नहीं करती, तो कस्टमर यही कहता है कि आपका मॉडल अच्छा है. कहता है भाई मार्केट की कीमत ये है, आपका अगर मॉडल उस कीमत को मैच नहीं करा तो आपका मॉडल टूटा हुआ है. मार्केट की कीमत तो मार्केट की कीमत, मैच द मार्केट. That's reality. That's it. You have to match it. Right? So you learn that. So I think एक जो piece जो transition हुई, part of this was engaging with corporate customers. Part of it was implementing systems in the real world. Part of it was dealing with this friend of mine would say कि मैं तो बूढ़ा साहब, आप पढ़े लिखे हैं, मैं तो जाहिल हूँ, मैं जुर्रत कर सकता हूँ आपसे पूछने की ये सवाल. I'd gotten very comfortable with saying, I don't know, I don't have the answer. Let me think about this, or let me get back to you about this. When SP Jain happened, and when there's a lot of stuff that happens with SP Jain because like तो वो थके हुए बच्चे आए हैं, मैं पाकिस्तानी, वो इंडियन, सड़ा बोर तरीन, खड़ूस तरीन सब्जेक्ट जो आप पढ़ा सकते हैं वो पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, and you have to keep them engaged, वो सब चल रहा है. And then you have a class like this, कि जी ये नहीं पढ़ना जो आप लेकर आए हैं, ये हमें आता है, ये हम पढ़ चुके हैं CFSE वाले में, हमें ये पढ़ना, ये पढ़ाया, राइट. इससे अच्छा ठीक है, let's see how to do this. Sometime in that time frame, and this didn't happen immediately, I realized, and I not realized, I accepted the fact
and I wasn't the teacher. That the students that I was working with were teachers. I was a student. मैं जब क्लास में जाता हूँ तो मैं सीखने जाता हूँ, मैं पढ़ाने नहीं जाता. पढ़ाना is a process, right? So मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं सिखा रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ. लेकिन in reality what is happening is that maybe I am teaching them something, but at the same time they are also teaching me a lot. And then that changes the nature of the relationship. Because you are no longer, आप फिर क्लास में सवाली बन के जाते हैं. ह्यूमिलिटी के साथ साथ. It's not just humility. You walk in with an open mind, with an active willingness to be challenged. And when you challenge, you don't let that challenge trigger your insecurity. You let that challenge help not just your own mind grow, but also grow their minds. And I'm not sure, it's not me. This is not something that I figured out. I think it's possibly a result of the process. It's mainly a result of the students I was blessed enough to teach. It's those, and not just at SPJ, not just at IBA, not just at SB, but also at the corporate customer that we worked with, the system that we implemented, the challenge. I had this CFO who said, system aapka apni jagah, mere number apni jagah, somewhere in between there is the truth, right? We don't know whether you're right, we don't know whether we're right. To figure it out to convince us. I'm open. I'm willing to accept the fact that I'm wrong. Are you willing to accept that you're wrong? What do you mean? मेरा system तो बिल्कुल ठीक है. मेरे से कोई फर्क नहीं. ये नहीं हो सकता. And if you say your system is correct and the numbers and the prices and the profitability that you're throwing out is correct, especially with Treasury, then prove it. Prove it in a language that I understand. I think that's the key. Prove it in a language that I understand. Don't prove it in a language that you understand. Prove it in a language that I understand. And I think this is something that spreads over a period of time, not just in teaching, but also in your engagement with customers. And it's sort of empathy also. It's empathy. It's trying to figure out and see things from their point of view. Yeah. Empathy here, and related to empathy is a genuine desire to ensure that they understand and that they're comfortable with what you've just covered. Because it's not just teaching, it is also Treasury system implementation is one of the most painful and torturous process or experience that you can go through. And in that process, it's very important that you have consensus across finance, which has its own view on how profitable a trade is, Treasury, which has its own view of how profitable a trade is, compliance, which has their own issues, right? Risk, which has their own questions, and your system. तो आपने 5 लोगों से 5 लोगों की ज़बान में बात करके उनको कन्विंस करना है कि जो नंबर आ रहा है मेरे पास, when the price is 101.235, then 101.235 is the right price. Irrespective of what your price is, what your price is, what your price is, what your price is. And you want them to do this willingly, without any baggage, without any friction, without any challenges to the fact that your system may or may not be the sole source of truth. So ये जो consensus building वाली चीज़ है, I think this is something that works just as well in the classroom or works even better in boardrooms. मुझे एक term बड़ी interesting लगी थी that you used in I think one of your blog posts or something. You said I'm not a desk jockey. Yes. एक साहब है, बहुत बड़ा नाम है उनका, and Stanford में पढ़ाते हैं, Steve Blank के नाम से, wrote Epiphany की कंपनी भी स्टार्ट की, big name in the lean startup movement. एक उनका स्टूडेंट था, उसी क्लास नोट से lean startup की किताब निकली. So he has this line, right? He says that get out of the building and no plans survive first contact with the real world. So आप कागज़ पे जो कुछ बनाना चाहें बना लें, लेकिन जब तक वो दुनिया में ही है पता नहीं चलेगा आपको. So I think एक बहुत important part is you have to get out of the desk. You have to step outside. You have to
push your seat back, step away from the desk, go out in the real world and talk to real people and see what happens. When I'm again very fortunate, very blessed कि मेरे बच्चे are in the age group that I teach. A lot of times when I have material, I ask, चलेगा नहीं चलेगा? I ask them, do you think this will work in the class? Is this something that you would want to look at? हम किसी और से बात करें तो मैंने कहा कि I think my साहबजादे जो उनसे मैं बात कर रहा था, मैंने कहा कि I think a course on typography, color theory and design principles should be a requirement in computer science curriculum. ऐसे कोई भी नहीं पढ़ेगा. And I go, what do? He says, relabel it UX, UI, principles of UX and UI. वही चीज़ पढ़ाएं, but call it principles of UX and UI. सब कुछ पढ़ेंगे. Everybody will come and enroll the class. आपके पास जगह नहीं बचेगी. But you call it color theory or typography, nobody would enroll it. That sounds about right. एक और हमारे जहन में सवाल आया था about classroom sizes. We wanted to experiment with something. So I asked my students, बढ़ोगे मैंने? इस साइज पे तो नहीं बढ़ेंगे. But you just ask them. It's ask me. वो I think वो मैं एक चीज़ मैं करता हूँ, यहाँ पे भी पढ़ाता हूँ, जब से WhatsApp आया है, तो for every class I create a WhatsApp group. So I think over the years बहुत सारे WhatsApp group बन गए हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं. तो most recent groups tend to be more active. तो जो most recent groups उनसे मैं पूछ लेता हूँ कि ये करने जा रहे हैं. And they're also the ones who just come through the process. So they represent the most recent contact with the new generation. So I just asked them कि करें, and they say हाँ कर लें, या say नहीं चलेगा. And in जो मैंने आपको बात की, when you go in the class as a सवाली, when you go not as a teacher but as a student, your relationship is very different. It's very upfront, honest relationship. I don't know the answers to the question you're asking. I can go back and look them up, but right now I don't. So your engagement with them is very... They respond to. Yeah, they respond to that. What are your time management hacks? How do you find the time for implementing all those things that you want to implement? What are you compromising here? Well, that's a very, very painful and sore, very, very sore. I think सबसे ज़्यादा सफ़र करती है वो फैमिली सफ़र करती है, घर वाले सफ़र करते हैं. So, and sometimes you're aware of it and you compensate, at least try and compensate. Sometimes you're not even aware of it and they take hits. So I'd say that the highest price that has been paid for everything that I've done has been paid by my family, by my wife, by my kids, by my parents, by my loved one. I'm not sure, when you look back, I'm not sure if that was the right thing to do. And then there are times and days when I have regrets कि शायद मुझे नहीं करना चाहिए था. But I don't think I have a good answer for this कि सही किया गलत किया. But apart from that, of course, I mean, one has limited time and then one inevitably has to compromise something. But even when you're in your non-family time and in your productive work time, how do you manage things? How do you manage that time, the time that you have at your disposal? I think एक चीज़, and this varies from person to person, but एक चीज़ I think that I feel has helped me a lot is that you have zones of flow where things flow. Now that could be a specific time, it could be a space, it could be how a desk is set up, it could even be a chair. So I think एक किताब मैंने सिर्फ एक कुर्सी बैठ के लिखी है. Then there was a time I used to write with hand. मैं कागज़ पे लिखा करता था, तो वो मेरी फेवरेट कुर्सी थी, और कुर्सी जब तक वो स्पॉट पे ही मैं लिखता रहा, जब वहाँ से हट गई तो मैंने लिखना बंद कर दिया, because I could no longer write. It's not the kursi, it's a kursi in that specific spot. The desk है, desk is जो मेरी बेटी का कमरा है उसमें डेस्क है, तो बेटे के में भी डेस्क है, ड्राइंग रूम में भी डेस्क है, हमारे कमरे में भी डेस्क है, बेटी के में भी डेस्क है.
लेकिन जो मेरी बेटी की हमने टेस्ट किया वो जिस स्पेसिफिक एंगल और इंक्लिनेशन पे और जिस लाइट पे लगी हुई है और जहाँ पे पंखा और हवा आती है और उसकी खिड़की जो है, हालांकि वो दीवार को फेस करती है, बट दैट डेस्क फ्लोज। और उसमें आप अगर एक किताब भी डाल दें तो फ्लो स्टॉप्स। इसी तरह IBA में जो मेरा कमरा है, 4 से 7 IBA स्टार्ट टू सॉर्ट ऑफ, खासतौर पे अभी छुट्टियाँ हैं, समर चल रहा है तो कैंपस इज़ नॉट फुली एक्टिवेटेड पॉपुलेटेड। वो कमरा 4 से 7 जो है, दैट कमरा फ्लोज। इट टेक्स टाइम टू सॉर्ट ऑफ establish that flow, right? It's like there are things happening and you need to sort of experiment and move things around to get to point. So this time, this space, this concept, this will... So I करके you find out and then you stack all those things that flow. And then you also have a priority, right? That says कि क्या कर सकते हैं हम. तो मेरे times है, for example, लिखने का time जो है मेरा वो 4 बजे का है, सुबह 4 बजे. सुबह 4 बजे. So if I have to write. I'm not about editing, I'm just about writing. So if I want writing to flow, it's 4 o'clock in the morning. So 4 से 5:30, 6 तक कोई नहीं होता. पहले this used to be 2 o'clock, रात के 2 बजे. और जैसे जैसे मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ तो वो 2 बजे की आदत बहुत भारी पड़ती है. कम से कम 4 बजे ये 4 बजे my day goes. If I get up at 2 and start writing, then my day is dead. But if I start at 4 o'clock and I can write till 6, then that works. That's one part. दफ्तर में हमारे पास एक जगह है, सर्दियों में ख़ास तौर पे जो हमारे पास एक खिड़की सामने लॉन है, तो वो खिड़की के सामने दरवाज़ा अच्छा रहता है, एक बड़ी विंडो. वो जो विंडो है वो विंडो खोल के आप सुबह नवंबर टू फरवरी 7:30 से 10, 10:15, तो आई कैन राइट देयर. दैट्स वेयर थिंग्स फ्लो. सो दैट्स एक स्पॉट. फिर दफ्तर में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे थिंग्स फ्लो. तो अगर मुझे काम करना था, फिगर आउट मैं यहाँ बैठ जाऊँ तो कर लेता हूँ. और आई थिंक उसमें जो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है प्रायोरिटी का. यू मस्ट नो कि करना क्या है. यू मस्ट राइट डाउन क्या करना है. यू मस्ट हैव दैट लिस्ट. एंड इवन इफ यू डोंट राइट डाउन, इफ यू गेट गुड एट इट, यू रिमेंबर ये लिस्ट है. कभी का होता है कि स्टैक में चीज़ फंस जाती है, करना कुछ और है लेकिन कोई और चीज़ घुस गई. अब जैसे आपने 3 बजे रिपोर्टें लिखनी है, लेकिन उस रिपोर्ट से पहले मुझे कुछ और काम करना है जो अचानक जहन में घुस गया है. बट irrespective of how much I try, irrespective of how much my customers scream and shout, till I finish this, I can't get to those reports. So then sometimes you have to accept that fact कि भाई ये कर लो, पहले ये कर लो, फिर रिपोर्ट पास, वरना कुछ नहीं होगा, फिर हो गया. So I guess you learn over a period of time. You learn to read your own signals of what you can and cannot do, of the priorities that you need to take care of. Places and spaces where your mind works well, where it flows, and then also a lot of help. So if you have a good team that works with you, then you don't have to do everything yourself. A lot of times you can ask for help कि भाई ये कर दो तुम, ये यहाँ फंस गया हूँ, इसको देखिए, उसको रिव्यू कर लो. लिखने में a lot of your inspiration, your muse essentially is conversations. So बात कर लो किसी से, और जो लिखा है वो दिखा दो किसी को, उससे पूछ लो चलेगा नहीं चलेगा. बच्चों से पूछ लो. Again, depending on what is that you want to do and how you want to do it, or different minds. Does that help? Of course it does. So, do you have any parting words for people who would want to become actuaries or teachers or authors or work in the technology space, or work with numbers, for example? What is your stock advice given today's environment? So for actuaries, for those of your audience members who want to explore the actual profession, don't do it for money. Do it because you love numbers. And only do it because you love numbers. Money will take care of itself. If you do it for money, in most instances, for most people that I know who've done it for money, has now not worked out. So that's true for all professions, right? Yeah. So don't do it for money. Do it because you love doing what you want to do. For you to love doing what you do, you have to understand what is it that you're doing with your hands. So answer that question. करोगे क्या? जब बन जाओगे तो करोगे क्या? Then actually physically क्या? Yeah, हाथ से क्या करोगे? तुम्हारा दिमाग क्या करोगे? वो find the answer to that question. That's what actually is. For those who want to come in the technology profession and the technology industry, we are not just programmers. There is a world of stuff that
we need to do, that we do as part of the technology profession, understand what that is, and then find your space within that. It could very well be code, but it may not necessarily be code. Be aware of that. And you find out by doing. Doing, talking, asking, seeing, और क्या क्या लोग करते हैं, बहुत कुछ होता है. अब तो बहुत, compared to where we were 40 years ago when we started thinking about computer science as a career, as a profession, you've got so many slices and flavors that you can't even enumerate them in a short conversation. तो देखिए आप कैसा लगता है, वो देखें. That's true. For those of you who are teachers in your audience, I think मैं लोगों से अक्सर ये कहता हूँ कि मैं बाप भी हूँ, मेरे बच्चे भी हैं जो पढ़ते हैं. जब मैं अपने बच्चे आपके पास भेजता हूँ पढ़ाने के लिए, तो मेरी कुछ एक्सपेक्टेशन हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप पूरी करें. बिकॉज एंड इट्स नॉट कि दिस इज़ अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन, it's not a commercial transaction, it's a transaction of trust. एंड ख़ास तौर पे हम वो बच्चे जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आए हैं, वो बच्चे जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आ रहे हैं आपके पास, घरों से आ रहे हैं, उनके माँ बाप जब उनको आपके पास भेजते हैं तो वो आपके पास इसलिए भेजते हैं बिकॉज उन्होंने सारी ज़िंदगी सुना होता है कि ये ना करो, वो ना करो, ये टूट जाएगा, वो टूट जाएगा, ये नहीं हो सकता. एंड यू नो माई प्री एवर फेवरेट के दिस इज़ पाकिस्तान. तो जब वो बच्चे अपने आपके पास भेजते हैं तो वो इसलिए नहीं भेजते कि आप उनको ये बताएं कि दिस इज़ पाकिस्तान. पता है आपको, वो रोज़ाना सुनते हैं बात, घर में भी सुनते हैं, घर से बाहर भी सुनते हैं. वो आपके पास इसलिए भेजते हैं कि आप उनको so that you can give them the gifts of wings so that they can fly higher than you and I have flown in our lives. Teaching was never a commercial transaction. It was always a transaction about opening up minds, about breaking down walls. It's a transaction of trust. It doesn't matter whether you teach kindergarten kids or you teach PhD students. Honor that trust. And sometimes it's very hard to remember that this is a transaction of trust. Sometimes, you struggle. Sometimes you're just having a bad day. But remember, okay, just ask yourself a simple question. अगर आपका बेटा या आपकी बेटी सामने बैठी होगी, तो क्या आप उसको कैसे पढ़ाएंगे? And this is a very controversial and contentious question because हमारे बच्चे हमसे नहीं पढ़ते. But even then, if your child was sitting in front of you, is this how you would want a teacher to treat them? Very easy to give up on a child. Very hard to keep on pushing till that child reaches wherever he or she needs to be. कोशिश तो करो, ट्राई तो करो. नहीं होगा तो नहीं होगा, कोशिश तो करके देखो, छोड़ो मत. So I think that's the key, right? So actuaries, technologists, and teachers. Founders भूल गया. Founders तो बस ना बन. Unless you're passionate about funding. Founders की सिर्फ एक ही एडवाइस है, मेरी 4 किताबें हैं, उसमें 2 खरीद के पढ़ लें. I think that ना खरीदें, चलें, खरीदने के पैसे नहीं. मुझे नोट भेज दें, मैं आपको भेज दूँगा. डिजिटल कॉपी भेज दूँगा, प्रिंट तो आउट ऑफ स्टॉक हो गई. So I'm happy to send. बल्कि इनफैक्ट आपको बहुत सारी तो आपको ऑनलाइन वैसे भी मिल जाएगी. If you just do search for reboot 3rd edition तो मिल जाएगी आपको. फाउंडर बदल की PDF जब भी चाहिए आप मुझे मैसेज कर दें, DM कर दें ट्विटर के ऊपर कि जवाब आपने कहा था कि आप भेज देंगे, मैं भेज दूँगा. Not a problem. Brilliant, very generous of you. Thank you so much, Jawwad Farid. It was such a pleasure talking to you. Thank you for your time. Thank you for inviting me over. And thank you for watching Kaam Kahani. Until next time, see you with another Kaam Kahani. Khuda Hafiz.